Hello everyone. Um, Today we are going to learn the living world, that is grade 11 chapter 1, and this video is for especially for the students who are preparing for NEET as well as the boards. So students, I'm Deepika. I'm a biology teacher and I will make your biology subject easier and interesting. So let's begin, all my kids. So firstly, I have to say that my lovely students, you can contact me through my Gmail. अगर आपकी कोई suggestions हो, like you want a specific chapter, one short video, if you want specific chapter की पूरी playlist चाहिए आपको. वैसे तो मैं सारे videos upload कर ही दूँगी, but in emergency, if you want any help, you can mail me, that is studentconnect100@gmail.com. So let's begin with the chapter. Basic features of living organisms. Now, the living world is diverse in terms of the variety of species it contains as well as the wide range of habitats where these creatures live in. However, there are certain features that are common across all living organisms. These are consciousness, metabolism, cellular organization, reproduction, growth. Now see, if we see the living world, it has so diversity. There are many multiple varieties of species. Now see, as well as each specific species have their certain habitats where all these creatures live in, right? Now see, but there are certain features, certain characters which are common across all living organisms. What are they? Consciousness, metabolism, cellular organization, reproduction, growth, right? We are going to see all this in detail. So let's begin. Just a minute. Yeah. Growth, reproduction, ability to sense environment, and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Now see, when we think about the living being, suddenly growth, reproduction, ability to sense environments come to our mind, right? And there are few more characters or a few more features we can say, like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to the list. Now see, emergence to the list. Our urinary bladder can store specific amount of urine, right? After that, we have to go to the toilet in emergency. So there are certain features of living organisms which differentiate him from other non-living things. So we are going to see each and everything in detail. So let's see. Now see, features of living organism. First feature, which is very important feature, that is growth. In living world, growth refers to increase in cell number and body mass. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Now see, in living world, in this entire living world, what is meaning of growth or what growth refers to? So increase in cell number, yani increase in cell number, cells increase होना, and body mass यानी body का mass increase होना. This refers to the growth in living world. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Now see, these questions come in NEET exam. Mark it that what are the twin characteristics of growth. So increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Now see, increase in mass यानी कि body का mass increase होना, body के number of cells increase होना are the twin characteristics of growth. Now, how does growth occurs in unicellular organisms? Unicellular organisms usually undergo cell division by binary fission. अब जो unicellular organisms है, they usually undergo the cell division. यानी उनका जो एक सेल है वो दो न्यू सेल्स बनाता है. That is called as cell division. And it is also called as binary fission. Okay, how they reproduce? By binary fission, they undergo the cell division in unicellular organisms. Now, growth in plants. In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout lifespan. Now see, if we think about the plants, growth occurs in plants continuously until they die. Plants keeps on growing. Okay. So the growth in plants occurs continuously throughout their lifespan until they do not die. They will continuously grow. Now, growth in animals. What refers to the growth in animals now? In animals, this growth
In animals, this growth is seen only up to a certain age. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. Now see, if we see in animals growth occurs to a certain age. Now see, until you become 18, your height will grow. After 18, your height growing will stop. So in animals, growth occurs up to a certain age. However, cell division, yani cells divide hote rehte in certain tissues to replace lost cell. See, why do cell division occurs in our body? To replace the lost cell, जो भी हमारे सेल से वो डैमेज हुए या जो भी हमारे सेल से जो कमजोर हो गए और जो भी हमारे सेल से they have lost due to the certain issues. So cell division occurs in certain tissues to replace lost cell. यानी जो सेल से वो डैमेज हो गए हैं उन्हें रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता ही रहता है हमारे बॉडी. ओके, इन सर्टेन टिश्यूज. Can growth occur in non-living objects? Yeah, growth can occur in non-living objects. Non-living objects also grow if we take increase in body mass as a criterion for growth. However, this type of growth is only extrinsic, that means outside the body. Now see, non-living objects grow बट उनकी जो ग्रोथ है वो बॉडी के बाहर से होती है यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है that is outside the body. Now see how this growth occurs by the accumulation of the material. Means this kind of growth occurs merely by accumulation of material on the surface. यानी एक on the surface एक जगह चीजें इकट्ठा होती जाती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज अ माउंटेन. Yes, sand is continuously moving. After the wind stops, the sand will accumulate on the surface of the mountain. This is called an extrinsic growth. यानी चीजें एक जगह इकट्ठा हो जाती है. Now, but can growth define living? But the question is, growth living को define कर सकती है. Growth occurs in living beings also and non-living also. So let's see. In living organisms, growth happens inside the body by cell division and cell growth. But since growth by accumulation of material, that is extrinsic growth, is also seen in non-living things, growth cannot be used to define the living organism. Now see, growth जो है वो living organisms को define नहीं कर सकती क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इनसाइड द बॉडी अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे इंट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स में जो बॉडी के बाहर से ग्रोथ हो रही है उसे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है. कीप इन माइंड दैट. So growth cannot define living. Now, features of living organisms. Second feature is reproduction. Reproduction is a feature of living organisms where a species propagates by giving birth to its offspring. Now see, reproduction एक ऐसा feature है जो race को continue करता है. कैसे कंटिन्यू करता है? by giving the birth to the offspring, by giving the birth to the young ones, by giving the birth to a baby, right? Reproduction can broadly occur through two modes, that is asexual or sexual reproduction. Now see, reproduction occurs mainly by asexual method or sexual method. Let's see. Asexual reproduction. In asexual reproduction, only one parent is involved. Now see, in asexual reproduction, only one parent is required. Okay. Now see, the offspring thus formed is a clone of parent. The offspring formed in asexual reproduction, it is very similar to the parents. Okay, it very similar, like a parent, which looks like a very similar to the parent. Unicellular organisms like amoeba and bacteria reproduce by binary fission, forming daughter cells. Now see, if we consider unicellular organism, amoeba is a unicellular organism, bacteria is also a unicellular organisms. They reproduce by binary fission, means one cell form two new cells. That is called as binary fission, forming daughter cells. Now see, I am mentioning a process of reproduction in amoeba. Let's see it. Now see, here is a parent amoeba. Now see, here the elongation of nucleus occurs. Okay, here is only one nucleus. The nucleus starts dividing in second stage. Then in third stage, division of nucleus and cytoplasm occurs. Now see, what is cytoplasm, what is nucleus? We are going to see it in cell chapter very soon. Now see, here division of nucleus and cytoplasm occurs, and here two daughter cells are formed. The newly born cells are called as daughter cells. Okay, so this is a binary fission, which is the mode of asexual reproduction. Now, a hydra. Hydra is a plant. So let's see how the hydra reproduce. So hydra and also is reproduced through budding.
Now see how parent hydra reproduce. See, parent hydra here, bird develops here, and a new bird is formed, and here a new hydra is formed. Okay, now see this bird gets nutrition from the parent hydra, and here a new baby is formed, or we can say a new bird, a new organisms is formed. Okay, now see this bird get differentiate from the hydra, and here a new hydra is produced. Okay, hydra and also is reproduce through budding. Okay, this method is called as budding, where the bird forms, birds get nutrition from the parent, and bird differentiate when it grows. Now, organisms like starfish and planaria reproduce by fragmentation. Now, see, fragmentation is also a type of asexual reproduction. Now, see how does this fragmentation takes place. Now, see here regeneration takes place. Now, see here is a starfish. It broke down. Now, see the remaining part of body gets regenerates, and a new organisms is formed. Now, see it completes itself with a piece of regeneration that breaks from the starfish bodies into living body. Now see, it is a mode of asexual reproduction, but here also new organisms is formed, which is the method of fragmentation. Now see, who reproduce by fragmentation? Starfish and planaria reproduce by fragmentation, where the body breaks, regeneration takes place, and a new body is formed. Now, asexual reproduction. In unicellular, reproduction is synonymous with growth, increase in number of cells. Now, see if we consider the criterion for increase in number of cells. So here, reproduction is very similar to the growth, because here cell divides and two new cells are formed. In growth also, cell divides and two new cells are formed. Now here, parent amoeba, then elongation of nucleus, division of nucleus and cytoplasm, and two daughter cells are formed. So this process is very similar to the growth. However, this is not applicable everywhere in the living world. But this is not applicable everywhere in the living world, because all organisms can't produce the asexual mode. Now, asexual reproduction. Multicellular organisms like starfish and hydra also resort to asexual reproduction by means of fragmentation. Now see, I explain you what is the fragmentation. Body breaks. Now see, this part of body gets regenerated and a new body is formed. So multicellular organism, starfish is a multicellular organism, hydra is a multicellular organism, but which also resort to asexual reproduction. These two multicellular organisms also reproduce by asexual reproduction by means of fragmentation. And the body formed is very genetically similar, means parent hydra looks very similar to the daughter hydra. Okay, now sexual reproduction. Now see, what is sexual reproduction? Parental organisms, both male and female, produce specialized cells called gametes that fuse together to form a zygote, which develops into offspring. This is the idea of sexual reproduction. Now see, parental organisms, both male and female. Okay, for sexual reproduction, male and female is required, which produce specialized cell. Okay, but living beings or humans have specialized cells called gametes. Animals also have. See, firstly, we will look into what are the gametes. So gametes are the specialized cells that fuse together to form a zygote. Now see, male specialized cells are sperms, and female specialized cells are called as egg, which are also called as male gametes and female gametes, which fuse together. Fertilization, we are going to see detail in human reproduction. So here we are just going to understand it. Deep concept we will see. So here the fusion takes place and zygote is formed. Zygote develops into embryo and embryo into baby. So this is the idea of sexual reproduction. Now, what are the exceptions of reproduction? First is infertile couples. Now see, all couples do not reproduce. Some have problems like less sperm count. Humans have females, sorry. Humans have many problems, especially females, like PCOD is there. Then male have problems like less sperm count. Due to this, couples can't reproduce. So there are many problems couples have. So some of the humans can't reproduce due to certain disorders. So these are the exception of reproduction, like sterile worker bees.
So there are worker bees which can't reproduce. One of the three types of honeybees, worker bees, are sterile and form the bulk of hive. Now see, the worker bees also can't reproduce, and infertile human couples also can't reproduce. These are the exceptions of reproduction. Now see, this is a very best example that except this is a very best example of exception of reproduction. Now see, female horse and male donkey reproduced. Fertilization takes place here, and a mule is formed. Okay, mule is a type of animal which is formed, which is hybrid. Okay, because they're female horse and male donkey reproduce, so it is a hybrid, but it is a sterile. Sterile means can't reproduce. So this mule also can't reproduce. Yeah. So this is the exception of reproduction. Now, can reproduction define living organisms? No, it cannot define because it has exceptions, right? It is a characteristic feature of living organism. However, there are few contradictions which we discussed. Contradictions means exceptions that we discussed, that mule can't reproduce, sterile worker bees can't reproduce, human infertile couples can't reproduce. Therefore, reproduction also cannot define a living organism since there are exceptions. Now, if we look up into third feature, that is metabolism. Now see, all plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. Okay, चाहे वो एनिमल भी क्यों ना हो, फंगाई भी क्यों ना हो, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्यों ना हो, वो मेटाबॉलिज्म दिखाता ही. Now see, what is metabolism exactly? The sum total of all chemical reactions occurring in our body is metabolism, including both anabolism and catabolism. Now see, जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनका एक सम टोटल जो है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, इंक्लूडिंग बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसाइज करना, चीजों को फॉर्म करना. कैटाबॉलिज्म मतलब चीजों को ब्रेक करना. Now see, catabolism, breakdown of more complex organic molecules into simple substances. अब से catabolism यानी कि एक complex molecule है उसे simple substance में break down करना, उसे catabolism कहा जाता है. और anabolism, combination of simple molecules into more complex. Anabolism यानी simple molecules एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. जब सिंपल मॉलिक्यूल्स हम कंबाइन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है, उसे एनाबोलिज्म कहते हैं. बट एनाबोलिज्म मींस सिंथेसाइज करना और कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना. सिंथेसाइज मतलब चीजों को फॉर्म करना, कैटाबोलिज्म मतलब चीजों को ब्रेक करना. Now, all living organisms are made up of chemicals. All these chemicals undergo several reactions in our body. These reactions are collectively called metabolism. Now see, all living organism, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आप कंसीडर करो तो सब सारे जो है वो केमिकल्स से बने, और ये सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर रिएक्शंस करते. they undergo several reactions in our body. These reactions are collectively called metabolism. So ये सारे reactions का sum total कहा जाता है metabolism. These chemicals are constantly being made and changed in some other biomolecules. Biomolecules एक specific chapter है, उसमें हम सारे biomolecules learn करेंगे. These conversions are called metabolic reactions. This clockwise of reactions keeps on going and provides us with energy. Now see, ये जो केमिकल्स है वो बॉडी में जो है कंटिन्यूअसली फॉर्म की जाते हैं एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स. यानी कि ये जो केमिकल्स है वो छोटे से छोटे बायोमोलिक्यूल्स में हमारे बॉडी में घूमते रहते हैं, रिएक्शंस करते रहते हैं. दिस कन्वर्जेंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है. जो केमिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मेड होके जो रिएक्शंस करते हैं उसी को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है. और वो जो सारे रिएक्शंस है, मींस इफ यू कंसीडर ऑल रिएक्शंस, उनका अगर हम सम टोटल करें तो उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है. अब ये रिएक्शंस रुकते नहीं है, वो तब तक होते रहते हैं जब तक हम जिंदा है, राइट? Until and unless we don't die, these reactions keeps on going and provide us energy. Okay. Now, can metabolism define living organisms? मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर सकता है, जरूर कर सकता है. मेटाबॉलिज्म इज व्हाट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मेक्स all the life functions possible. Metabolic reactions of organisms grown in vitro are living reactions, but they can't be explained as the property of living beings. Okay. Now see, मेटाबॉलिज्म क्या है? ऐसे रिएक्शन है जो हमारे बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं और हमारी लाइफ फंक्शंस जो है वो बहुत इजीली हमें एनर्जी
अगर हमारे बॉडी में है तो हम सारे लाइफ फंक्शंस इजीली कर सकते। पर अगर इन विट्रो यानी कि टेस्ट ट्यूब में हमें रिएक्शंस कर सकते, जरूर कर सकते, और उसे लिविंग रिएक्शंस भी कहा जा सकता है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ओके, टेस्ट ट्यूब में हम लिविंग रिएक्शंस जरूर कर सकते हैं और उसे लिविंग रिएक्शंस भी कहा जाता है, बट वो एज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, now see, hence metabolism is without exception is one of the defining property of living organism. अब तक हमने देखा ग्रोथ देखा, रिप्रोडक्शन देखा, उसको कोई ना कोई एक्सेप्शन था, लेकिन मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसको कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ओके, नाउ so here are the some reactions that I mentioned, you can read it later. So this is the defining property of living organism, which is metabolism. Now, features of living organism: cellular organization. Now see, our body is made up of cells, right? Cellular organization of the body is the defining characters of the living beings. All organisms are made up of cell, hence they are called structural units of the life. Now see, cellular organization है, वो भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी है। ओके, एंड सेल्स आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, बिकॉज सेल्स ना होते तो हम ना होते। नाउ सी this is the history we will look in. Firstly, cells are formed, then tissues are formed. जब सेल्स इकट्ठा होते हैं तब टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनता है, जब ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब सारे ऑर्गन सिस्टम्स इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। इन प्लांट्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो. See, firstly here is a plant cell, then plant tissue is formed, then a leaf is formed, then a plant's organ system is formed, and then a plant, which is also a living organism, it is formed. Now, features of living organism: consciousness. Now see, living organism can sense their environment and respond to different environmental stimuli, be it physical, chemical, or biological. Consciousness or response to stimuli is also a defining features of living organism. Now see, हम जो living organisms है वो चीजों को respond करते हैं, चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो। जैसे कि अगर हम plants का देखें, plants sunlight को response करते हैं, photosynthesis करते हैं, food बनाते हैं, right? So living organisms have ability to sense environment and respond to environmental stimuli, चाहे वो physical हो, चाहे वो chemical और चाहे वो biological हो, living organism environmental stimuli को respond करता है। Consciousness और response to stimuli is also a defining feature of living organism. So ये consciousness भी without exception is the feature of living organisms. Okay. Now all organisms are aware of their surrounding. सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ. ह्यूमन बीइंग हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सारे ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता, ओनली ह्यूमन हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. ओके, सारे ऑर्गेनिजम्स तो अवेयर होते हैं सराउंडिंग के बाबत, सराउंडिंग के बारे में, बट ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो हम खुद के बारे में अवेयर होता है, राइट? वी आर सो कॉन्शियसनेस, हाउ आवर लुक्स आर, ओके, हाउ शुड वी स्टडी, वी आर सो कॉन्शियसनेस. ओके, वी हैव सो कॉन्शियसनेस, दैट व्हाई वी आर सो कॉन्शियस. सो ह्यूमन बीइंग हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इसे क्या कहा जाता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है. नाउ सी, सो ये रहे फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. उसमें हमने देखा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ कैरेक्टर्स है, वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ nomenclature. Now let's see what is nomenclature. So nomenclature, the standardization of naming of living things is called nomenclature. Okay. Now see, standardization of a naming means चीजों को नाम देना, इसे क्या कहा जाता है? nomenclature कहा जाता है. The scientific name is given to each known organism to avoid confusion. Now see, each and everyone has specific name. तो ऐसे जो living organisms हमें पता है,
उस कंफ्यूजन बचाने के लिए उन्हें भी नाम देना बहुत जरूरी है, एंड इट ensures that each organism has only one name all over the world. Now see, my name is Deepika. You know my name is Deepika. बट घर में मुझे कुछ और बुलाते, राइट, वो आपको नहीं पता। मेरा नाम दीपिका है, जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है, लेकिन जो मुझे घर पे बुलाते हैं वो सिर्फ मेरे घर वालों को पता है, राइट। सो ये बहुत जरूरी है कि लिविंग बीइंग को एक ही नाम हो जो उसे पूरी दुनिया जानती है उसी एक ही नाम से, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन जो है वो नहीं होता है। ओके, nomenclature ensures that such a name has not been used for any other known organism. अब जो ये nomenclature की सिस्टम है कैसी काम करती है, ये पहले इंश्योर करती कि या ये नेम किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं दिया है ना। ओके, अगर ये नेम किसी और ऑर्गेनिज्म को दिया होता तो वो नाम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को नहीं देते। Nomenclature is possible only after identification of organisms. Now see, जब तक हम organisms को identify नहीं करते तब तक हम नाम उसे नहीं दे सकते, तब तक nomenclature possible नहीं है। Now see, for plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBM. Now see, scientific name जो हम plants को देते हैं वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नोट इट डाउन, इट्स इंपॉर्टेंट। फॉर एनिमल, टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZ। अब एनिमल्स को टैक्सोनॉमिस्ट में क्या इवॉल्व किया गया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे एनिमल्स को नाम दिया जाता है। नाउ सी, but an organism can have a variety of names in different communities and countries. Now see, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर को टाइगर बोलते, लेकिन अगर साइंटिफिक भाषा में हम बोले तो उसे कहा जाता है पैंथेरा टिग्रिस। ओके, सो ये वो आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कम्युनिटीज में एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ओके, हम हिंदी में कुत्ता बोलते, इंग्लिश में डॉग बोलते, राइट। सो maybe some Americans can't understand what is kutta, right? They may be understand that dog. So ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म को कई सारे नाम हो सकते हैं। सो अब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हम आगे देखने वाले, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, for avoiding confusion and chaos while classifying organism, a systematic set of rules was adopted which is called as binomial nomenclature. Actually, what happens, my throat is paining a lot, that's why there is some voice issues. So it is called as binomial nomenclature. Now see, which was given by Carolus Linnaeus. Each name has two components, the generic name and specific epithet. Okay, now see, ऐसा हो सकता है, बहुत सारा कंफ्यूजन और केओस हो सकता है जब हमें ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक नाम नहीं पता हो, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट नाम होते हैं। तो इससे एक सिस्टमैटिक रूल से, सिस्टमैटिक सेट ऑफ रूल से उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है, which was given by Carolus Linnaeus. Okay, this was the scientist whose name is Carolus Linnaeus. तो इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है जो सेट किया है। Each name has two components. यहाँ पे नेम को दो components है, एक जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। Now this is a mango. Okay, आम भी बोला जाता है उसे हिंदी में। This is a mango. Now see, genus यानी जेनेरिक नेम। ओके, इसका क्या दिया है उन्होंने, मैंजाइफेरा, और स्पेसिस यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट क्या दिया है, इंडिका। ओके, मैंजाइफेरा इंडिका is the scientific name of mango. We are going to see how this name is written also. Now, अभी सिर्फ इतना याद रखना कि नाम को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, एक जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, जीनस को ही बोलते हैं जेनेरिक नेम और स्पीसीज को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। मैंगो का नाम क्या है, मंजाइफेरा इंडिका। नाउ universal rules of nomenclature. Now see, what are the universal rules of nomenclature? Biological names are generally written in Latin and written in italics. Now see, Latin क्यों, Latin एक dead language है जिसमें कोई भी changes नहीं होते आप। Okay, so remember, biological names are generally in Latin and written in italics. Italics यानी
इटैलिक्स मैंने यहाँ फॉन्ट भी इटैलिक्स डाला है, यू कैन सी इट हाउ ऐसा टेढ़ा फॉन्ट होता है वो इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये नहीं चेक करते ओरिजिन का है, लैटिन से लैटिन लैंग्वेज से ही वर्ड सिलेक्ट करते हैं और नाम देते हैं इससे। और ये बहुत जरूरी है कि वो इटैलिक्स में लिखे, ओके। बट हाउ आर दोस साइंटिफिक नेम्स रिटन, बट ये लिखते कैसे वो देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, अभी जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरिक नेम यानी नेम ऑफ जीनस है, ओके। सी हियर आई एम रिटन मंजाइफेरा, इट इज द जेनेरिक नेम, that is the name of genus, while the second component is near the specific epithet, यानी कि name of species को कहा जाता है specific epithet, indica it is of mango, both words in a biological name when handwritten। अभी देखो ये मैंने ऐसा एज्यूम किया है कि ये मैंने हैंड रिटन किया है, ओके। जब भी आप हैंड रिटन नेम लिखोगे, साइंटिफिक नेम जब आप हैंड रिटन लिखोगे, तो ये बहुत जरूरी है कि आप दो वर्ड्स को अंडरलाइन करें, जो भी जेनेरिक नेम है और जो भी स्पेसिफिक एपिथेट है, मींस नेम ऑफ जीनस एंड नेम ऑफ स्पीसीज शुड बी अंडरलाइन व्हेन यू आर राइटिंग इट ऑन पेपर, ओके, आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट्स देयर लेटर। और इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है क्योंकि उनको लेटर ओरिजिन जो दिखाने के लिए, ओके। So while writing on paper, you will always write by underlining the word, okay। Mangiifera indica, underline Mangiifera, that is generic name, underline indica, that is specific epithet। Now the word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet start with a small letter। Now see, अब जो भी है वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो भी जेनेरिक नेम यहाँ पे, वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो भी स्पेसिफिक एपिथेट है, जो भी नेम ऑफ स्पीसीज है, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ओके। इट्स नॉट लाइक योर नेम, इट इज अ साइंटिफिक नेम जो हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाएगा। जब भी आप पेपर में लिखो वो अंडरलाइन किया जाएगा, और फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल रहेगा, दैट इज द जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल रहेगा और स्पेसिफिक एपिथेट हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, ओके। नाउ इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मंजाइफेरा इंडिका, मैंने आपको अभी शो किया। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that at the end of the biological name and it is written abbreviated। नाउ सी ऑथर का है, जो ऑथर कौन है, अब लीनियस है समझो। तो लीनियस का पूरा नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ एब्रिवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, मंजाइफेरा इंडिका लीन। नाउ सी ऑथर का जो नाम है एट द एंड ऑफ एंड इट इज रिटन एब्रिवेटेड, वो एकदम लास्ट में लिखा जाता है, वेरी वेरी लास्ट, ओके। इट इज ऑलवेज रिटन एट द लास्ट, कीप इन माइंड, ओके। नाउ सी क्या देखा हमने, मंजाइफेरा इंडिका जो जेनेरिक नेम है उसका एम हमेशा कैपिटल, कोई भी जेनेरिक हो उसका जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल। देन ऑलवेज यूज द स्मॉल लेटर्स फॉर द अदर वर्ड्स, अंडरलाइन व्हेन यू आर राइटिंग इट ऑन पेपर, ओके। जनरली आप पेपर पे ही लिखते हो, राइट। और हमेशा इटैलिक्स में लिखो क्योंकि हमें उसका लैटिन ओरिजिन दिखाना है, ओके। नाउ what is classification? Now see, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। Classification is devised to study all the living organisms which was not possible earlier, okay। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, चीजों को क्लासिफाई करना, ग्रुप करना, जो भी आपको सिमिलर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल है आपको सिमिलर कैरेक्टर, उनको एक जगह डालना, राइट। क्लासिफिकेशन इज डिवाइस टू स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। नाउ सी क्लासिफिकेशन जो स्टडी है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स के करना उस समय में पॉसिबल नहीं था, ओके, लेकिन अब है पॉसिबल वैसे तो, ओके। Now see, this is a very important slide. Hippocrates is the father of medicine. Aristotle is the father of zoology. Theophrastus is the father of botany। सारे साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं in upcoming chapters। Like Hippocrates and Aristotle was first to arrange animals on the basis of habitat into aquatic, terrestrial, aerial animals। Theophrastus divided plants on the basis of forms, texture and habitat, it is not habit। Now see, अरिस्टोटल जो थे वो फादर ऑफ जूलॉजी थे, हाइपोक्रेट्स जो थे वो फादर ऑफ मेडिसिन थे। तो ये पहले इंसान थे जिन्होंने एनिमल्स को अपने हैबिटेट के बेसिस पर अरेंज किया। मतलब
If it is fish, is aquatic, which is living in water. If it is terrestrial, like humans, we live on the land. If which it is aerial, okay, like birds. So they arranged it firstly. Theophrastus divided plants on the basis of form, texture, and habitat. Okay. थियोफ्रेस्टस एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट को फॉर्म से, टेक्सचर से और हैबिटेट से डिवाइड किया. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस 3 साइंटिस्ट. उनके बारे में आगे भी हम बहुत डिटेल में सीखने वाले, लाइक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, जो भी आपके मन में डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए 11th स्टैंडर्ड में. यू विल गेट अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजी नाउ. So this was all about the today's lecture. So especially आप जो भी मैंने स्लाइड्स दिए वो मैंने खुद से बनाए, खुद से डिजाइन किए फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स ओनली. सो स्टडी वेल एंड कीप वर्किंग हार्ड. और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी अपडेट होगा. सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताना मत भूलना. So share it so all the students can use these videos for the studies. So thank you so much. Bye.